बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we will talk about hypotheses and its types. In research, formulation and testing of hypotheses is considered an important activity. To understand the detail of formulation as well as testing of hypotheses, first of all, it is important to know about hypotheses and its types. So, what is hypothesis? The term hypothesis derives from a Greek word "hopo" and "thesis". The word "hopo" means under and the second word "thesis" means placing. In essence, it means to place under or to support. अगर हाइपोथेसिस के लफ्ज़ को हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड होपो और थीसिस से निकला हुआ है. होपो का मकसद है अंडर और थीसिस का मकसद है प्लेसिंग. सो दोनों का मकसद बनता है किसी चीज़ के बारे में जब आप कोई सजेशन, कोई सोल्यूशन सपोज करते हो, सजेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. In research, the term hypothesis refers to the concept or the idea that you test through research and experiment. In other words, we can say that it is a prediction or the suggested solution of any problem. अगर रिसर्च में हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस का मकसद वो कॉन्सेप्ट या कोई भी आइडिया जिसको रिसर्चर रिसर्च के जरिए या एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मसले की जो सजेस्टेड सोल्यूशन है, जो एक सोल्यूशन बताई गई है, उसको भी हम हाइपोथेसिस कहते हैं. So, what are the basic types of hypotheses? There are basic 6 types of hypotheses. The first one is simple hypothesis, second one is complex hypothesis, third one is directional, fourth one is non-directional, fifth one is null hypothesis, and last one or sixth one is alternative hypothesis. So what is simple hypothesis? A simple hypothesis is the type of hypothesis which indicate the relationship or effect or difference between or among two variables, that is independent variable and dependent variables. For example, recreational sports and psychological performance of athletes is linked with each other. अगर सिंपल हाइपोथेसिस की हम बात करें तो सिंपल हाइपोथेसिस का मकसद वो हाइपोथेसिस जहाँ पे एक साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मकसद है कि अगर एक साइड इंडिपेंडेंट हो, दूसरे साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इनका आपस में या आप रिलेशनशिप या इनका आपस में डिफरेंस या इनका आपस में एक दूसरे पे असर मालूम करते हो या बताते हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स और साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट जो है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है या एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या कनेक्टेड है. सो दैट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस. सो second one is complex hypothesis. A complex hypothesis is a type of hypothesis which describe the relationships or describe the effects or difference between two or more than two variables. So जो complex hypothesis है, यहाँ पे रिलेशनशिप, इफेक्ट या डिफरेंस बताई जाती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के आपस में. अब ये जो वेरिएबल्स है, मकसद है कि अगर एक साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा है और दूसरे साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो या दो से ज़्यादा है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डाइट एंड एक्सरसाइज हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट. मिसाल के तौर पर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज का आपस में इन दोनों का फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट पे क्या है,
असर है, सिग्निफिकेंट असर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि डाइट एंड एक्सरसाइज हैज significant relationship with physical and mental performance of athlete. So उसके बाद जो third type of hypothesis है that is called directional hypothesis. Directional hypothesis is that type of hypothesis where the researcher indicate specific predictions about an effect or relationship between two or more than two variables. जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में रिसर्चर पहले से प्रेडिक्शन देता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप के बारे में, या आपस में एक दूसरे पे असर के बारे में, या आपस में डिफरेंस के बारे में वो पहले से प्रेडिक्शन देता है. फॉर एग्जाम्पल, caffeine is linked to an increase in activity level is directional hypothesis because it predicts a specific effect. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कैफीन क्या करती है, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ एक्टिविटीज को. ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है क्योंकि ये बताता है, डायरेक्शन बताता है कि ये क्या करता है कि ये लेवल ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाता है. मकसद है कि पहले से एक प्रेडिक्शन दी गई है. या हम एक मिसाल लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हैज सिग्निफिकेंट और कार्बोहाइड्रेट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट. हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक एथलीट की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली तौर पर इंक्रीज करेगा. सो इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्योंकि इसमें पहले से डायरेक्शन बताई जाती है. और फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. A non-directional hypothesis does not predict the exact direction or nature of the relationship between the variables. A researcher would utilize this kind of hypothesis if it is not based on theory or when the new research findings contradict the previous research. जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में रिसर्चर सोल्यूशन तो बताता है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. यानी जब आप दो या दो वेरिएबल का आपस में एक दूसरे पे असर या एक दूसरे का आपस में रिलेशनशिप या डिफरेंस बताते हैं लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता कि ये इस तरह होगा. सो दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हम मिसाल इस तरह देते हैं कि कैफीन कॉज ए चेंज इन एक्टिविटी लेवल. So it is non-directional hypothesis because we are unable or the researcher without specifying whether their change will be an increase or decrease in level of activities. So next hypothesis is null hypothesis. The null hypothesis of a test always predicts no effect or no relationship between variables. आसान लफ्जों में नल हाइपोथेसिस में रिसर्चर प्रेडिक्ट करता है कि या इफेक्ट नहीं है, या रिलेशनशिप नहीं है, या डिफरेंस नहीं है बिटवीन टू वेरिएबल्स. नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच नॉट. नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से जाहिर करते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर बेस्ड ऑन जेंडर. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यहाँ पे कोई इसकी जो सैलरी है उसमें कोई फर्क नहीं है. या हम इस तरह ये भी मिसाल लेते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एथलीट्स. जहाँ पे हम नो का लफ्ज और नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट का या इम्पैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. Alternative or alternate hypothesis states your research prediction of an effect or relationship. जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें रिसर्चर जो होता है वो पहले से प्रेडिक्शन देता है कि अबाउट इफेक्ट, अबाउट डिफरेंस, अबाउट रिलेशनशिप. जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें रिसर्चर पहले से बताता है कि या तो रिलेशनशिप होगा या डिफरेंस पहले से मौजूद होगा, या साथ में कहेगा कि इनका आपस में
एक दूसरे पे असर होगा। सो द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच ए। हम मिसाल लेते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, मेल फैक्ट्री वर्कर हैव अ हायर सैलरी देन फीमेल फैक्ट्री वर्कर। हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जो मेल फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होगी फीमेल से जो कि एग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, दूसरा मिसाल ये भी दे सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एथलीट्स। सो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो थैंक यू वेरी मच।